Good afternoon, everyone. How are you all? I hope all of you are very well and doing well. And yes, that is important that I need to ask this question, are you practicing or not? Because that is very important. We've been doing different topics. We have covered different topics. In the last class also, I shared some examples of active and passive voice. And again, active and passive voice, you would see, as I shared earlier also, that there are certain situations where you need to make sentences with the help of active and passive voice. So there are some sentences that you will make in passive voice. And in order to use passive voice, in order to make sentences in passive voice, there are certain rules that you need to follow. And we saw some of the rules in previous classes, how to change sentences from active voice to passive voice. And again, we change sentences as per the structure, as per the situation. So it could be present, it could be past, it could be future, it could be perfect. So according to that situation, there will be a sentence in active voice, and seeing that sentence, you will change it into passive voice. So that's what you have to do. And again, you have to understand how to use passive related sentences, how to make such sentences when there are certain situations. And this you will understand when you think, when you talk about something, and there you realize that, okay, this is the sentence that I need to make in passive voice. So there are certain sentences that you will use, you will make in passive voice, and that's how you use passive voice. And again, this is something that when you make sentences, when you use them a lot, you get into the habit of using them. You get into the habit of understanding them, because passive voice is somewhat different. That is not as active voice, right? So active voice is very simple. Subject is there, subject does the action. In passive voice, we emphasize on object, we focus on object, and that's why we use passive voice. Object could be actually a object, or object could be person also. That depends that what is the speaker thinking, how speaker wants to talk about that certain situation, that particular situation. So as per the situation, this depends on the speaker to use passive voice, to use active voice, right? So it's not like that it is compulsory to use passive voice. If a speaker thinks that a speaker can make the same sentence by using active voice, the speaker can do so. And if the speaker thinks that the focus needs to be shifted, for example, we did one example that a letter is being written. So their focus is on letter. A letter is being written. Of course, you can say the same sentence that Ravi is writing a letter, Radha is writing a letter. That is active sentence. But if you want to focus on letter, letter is important for you. You want to emphasize on letter. So there you are saying letter is being written, or letter is written, letter has been written, letter was written. So again, it depends on the situation. It depends on the structure. So according to the situation, according to the structure, you will make sentence, you will use it. Okay. So make some sentences, think some sentences, use a different sentences, and then see the sense, because sense is also important. जो meaning निकलता है passive voice में sentences का, तो that is somewhat different from the active voice. तो थोड़ा सा उसकी भी understanding होना जरूरी है कि this kind of sense comes, और उसके साथ साथ ये understanding important है कि हम क्यों use कर रहे हैं passive voice, because हमारा focus shift हो जाता है. जैसे हमारा example है letter, right? ये जो letter वाला example है, एंड इसलिए हमने एक ही सेंटेंस को लेके डिफरेंट सेंटेंसेस बनाए, कंटिन्यूअस भी बनाया, पास्ट भी बनाया, परफेक्ट भी बनाया, इसलिए कि वो समझ में आए कि क्या चेंज हो रहा है एंड किस तरह का सेंस निकल रहा है. ओके, सो दिस यू हैव टू कीप इन हेड, एंड अगेन यू हैव टू थिंक ऑफ योर ओन सेंटेंसेस. लास्ट क्लास में आप लोग को कुछ एग्जांपल्स शेयर किए थे, आप लोगों से बोला था कि आप लोग ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, इनको पैसिव वॉइस में ट्राई करिए, देखिए, चेंज करके देखिए, एंड उसका सेंस समझिए कि किस तरह का सेंस निकल रहा है. सो आई होप दैट यू हैव कंप्लीटेड दो सेंटेंसेस, एंड if there was any confusion, if there was any question, then you have comment section. You can drop your question, drop your confusion there, or you can ask
right? Related to any structure, related to any situation, your confusion, your doubt. Because if there is doubt, you need clarity. And when clarity is there, then you need to use that part. Okay, so that's why it's important. Okay, so जल्दी से अभी तो पहले हम जो एग्जाम्पल्स लास्ट क्लास में दिए थे आपको, जल्दी से मैं आपको आई विल जस्ट टेल यू, you have to listen to them, and again you have to see whether those sentences, your sentences, are okay or not. And if there is correction, you will do that correction, right? You will make it, and then you will see the sense, right? Because that is important. Okay, and today हम थोड़ा सा आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में भी समझेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, ये इसका हम थोड़ा सा आइडियाज लेंगे। अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एंड अगेन ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो राइटिंग में ज्यादा यूज होता है, राइट? सो राइटिंग में ज्यादा यूज होता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्पोकन में यूज नहीं होता, स्पोकन में भी यूज होता है। तो अगेन ये जो जितनी भी चीजें हैं, इनके हमको एज ए स्पीकर हमको सारे आइडियाज होना चाहिए, राइट? कि किस सिचुएशन में क्या यूज होना है, किस सिचुएशन में क्या यूज कर सकते हैं। अब वो तो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको यूज करना है या नहीं यूज करना, लेकिन एटलीस्ट आइडियाज होना चाहिए, सो दैट इफ यू वांट टू यूज, राइट, वहां पे आप उसको यूज कर लें। रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, या हम इसको नरेशन बोलें, राइट, ये रिटिन में ज्यादा यूज होता है, राइट? सो कैसे यूज होता है, क्या उसमें चेंजेस होते हैं, ये हम नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में देखेंगे, एंड इसको थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे हम इनको सेंटेंसेस को यूज करते हैं, किस तरह का सेंस निकलता है जब हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो I'll share those sentences that I shared earlier with you, and I asked you to write पैसिव सेंटेंसेस ऑफ दोज एक्टिव सेंटेंसेस, राइट? आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं कि आपने कोई पैसिव सेंटेंस सोचा, उसको एक्टिव में ट्राई करके देख लीजिए। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, पैसिव से एक्टिव में करिए, एक्टिव से पैसिव में करिए। जितना ज्यादा ऐसे सेंटेंसेस करेंगे, जितना ज्यादा आप सेंटेंसेस सोचेंगे, यूज करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, so I clean my room every day. I'm not going to write passive sentence here. I will only say, you listen to it, and if it is okay, then it's okay. If there is some correction, you will pause and you will make that correction in your notebook if you have written all these sentences in your notebook. All right, I clean my room every day. Okay, so how will you change it into passive? I clean my room every day. My room is cleaned every day by me. By me is optional, right? It is always optional, whether you want to say and whether you don't want to say. My room is cleaned every day by me. All right. Tom bought a nice present yesterday. A nice present was bought yesterday by Tom. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, a nice present was bought by Tom yesterday. Okay, so we can make this passive sentence like this in both ways. So yesterday last में भी हो सकता है, yesterday पहले भी आ सकता है, no problem. By Tom हम यूज कर सकते हैं, by Tom को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, राइट? A nice present was bought yesterday. अगर हमको Tom यूज करना है, किसके द्वारा खरीदा गया था, ये भी बताना है, so by Tom. ओके, एंड पैसिव वॉइस के हिंदी सेंटेंसेस पे भी ध्यान देंगे, राइट, कि क्या सेंस निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एंड विल सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, राइट? सो एंड विल सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग विल बी संग, right? Third form, always third form. A beautiful song will be sung by Anne. Okay, a beautiful song will be sung by Anne, right? Next one, Ben repaired my computer yesterday. Ben repaired my computer yesterday. All right, past related sentence. My computer was repaired yesterday by Ben. मेरा कंप्यूटर बेन के द्वारा सुधारा गया था, राइट? सो यहाँ हम माई कंप्यूटर क्यों यूज कर रहे हैं पैसिव? बिकॉज पैसिव में यही होता है कि हमको एम्फेसाइज करना है ऑब्जेक्ट पे हमने एम्फेसाइज कर लिया कि मेरा कंप्यूटर, राइट? बेन ने रिपेयर किया मेरा कंप्यूटर कल, एक्टिव वॉइस, मेरा कंप्यूटर, माई कंप्यूटर वॉज रिपेयर्ड बाय बेन यस्टरडे। मेरा कंप्यूटर बेन के द्वारा कल सुधारा, रिपेयर किया गया था, राइट? सो दिस इज your passive sentence. My sister is making a tasty cake now.
मेरी सिस्टर अभी एक टेस्टी केक प्रिपेयर कर रही हैं, बना रही हैं, राइट? दिस इज योर एक्टिव सेंटेंस. If you want to change it into passive, then what will you say? A tasty cake is being made, right? Make की जगह हम prepared भी use कर सकते हैं. A tasty cake is being prepared by my sister now. A tasty cake is being prepared. अब passive voice है, use हो रहा है tasty cake, तो किस तरह का सेंस निकल रहा है? केक के ऊपर हमारा फोकस चला गया, केक पे हमने फोकस डाल दिया, राइट? केक के ऊपर हम फोर्स कर रहे हैं. ओके, सो अ टेस्टी केक इज बीइंग मेड. टेस्टी केक बनाया जा रहा है, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, तो इसलिए हम पैसिव में भी इसको बीइंग यूज करके कंटिन्यूअस बना रहे हैं. सो अ टेस्टी केक इज बीइंग मेड बाय माय सिस्टर नाउ. अभी मेरी सिस्टर के द्वारा टेस्टी केक बनाया जा रहा है. अब हम इसको ऐसे तो नहीं बोलेंगे अ टेस्टी केक इज मेकिंग, गलत हो जाएगा, सेंटेंस सेंस भी गलत रहेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई वी यूज पेसिव वॉइस, राइट? नॉर्मली हिंदी में हम ऐसे बोलते थे, आज मेरी सिस्टर टेस्टी केक बना रही, राइट? माय सिस्टर इज मेकिंग अ टेस्टी केक. दिस इज एक्टिव वॉइस. टेस्टी केक बन रहा है, राइट? इफ यू से लाइक दिस, टेस्टी केक बन रहा है, तो हिंदी में तो हम ऐसे ही बोल देंगे टेस्टी केक बन रहा है. सो सेंटेंस जब आप इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हम ऐसे बोलेंगे? टेस्टी केक इज मेकिंग, राइट? सो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हिंदी का ट्रांसलेशन एज इट इज नहीं होता. काफी सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आप इसको एज इट इज ट्रांसलेट नहीं कर सकते, और ये एक ऐसा ही एग्जाम्पल है कि यहाँ पे हमको पैसिव वॉइस यूज करनी है, राइट? सो अ टेस्टी केक इज बीइंग मेड बाय माय सिस्टर नाउ, राइट? ऐसे ही नॉर्मल से सेंटेंस है, हम बोल रहे हैं कि चाय बन रही. चाय खुद तो बन नहीं रही, हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे टी इज मेकिंग. नो, रॉन्ग सेंटेंस. ओके, सो टी इज बीइंग मेड, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माय मदर, बाय माय सिस्टर. मतलब हिंदी का सेंस जो है कि चाय बनाई जा रही. सो पे अटेंशन टू सच काइंड ऑफ sentences and then see when you make such sentence whether the sense is coming out properly or the sense is not meaningful, right? So there you can get the idea whether to use passive voice or active voice. All right. ओके, वी हैव बॉट टिकट्स टू द कॉन्सर्ट. यहाँ पे हम सेंटेंस में देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है. जल्दी से सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए दैट व्हाट इज द सेंस कमिंग, व्हाट इज द स्ट्रक्चर हियर. एज पर द स्ट्रक्चर यू विल चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. वी हैव बॉट टिकट्स टू द कॉन्सर्ट, राइट? टिकट्स हैव बीन बॉट. Tickets have been bought by us to the concert, for the concert, right? We have bought tickets to the concert. We can use for the concert also, but the passive voice, when we make passive voice sentences, perfect sentences, then we use been there. Tickets have been bought. Tickets खरीद लिए गए हैं, right? Tickets have been bought by us. We will become us. We us हो जाएगा. Okay? So पे अटेंशन टू दीज स्मॉल चेंजेस, एंड जितना ज्यादा आप सेंटेंसेस खुद से करेंगे, ये जो एग्जांपल्स हैं इससे भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे पैसिव सेंटेंस जब आपने ट्राई करा होगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सेंस निकल रहा है, कैसे हम चेंज कर रहे हैं. Helen teaches French at school. Helen teaches French at school. Understand the sentence, understand the structure, situation, that it is related to the habit, routine of Helen. Helen teaches French at school. Okay. फ्रेंच इज टॉट. यहाँ पे फोकस हमारा फ्रेंच लैंग्वेज पे चला गया. फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच इज टॉट एट स्कूल बाय हेलन. सो फ्रेंच इज टॉट बाय हेलन एट स्कूल. फ्रेंच इज टॉट एट स्कूल बाय हेलन. You can make a sentence like this also. फ्रेंच पढ़ाई जाती है. ओके, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हेलन पे फोकस कर रहे हैं, हेलन पढ़ाती है फ्रेंच स्कूल में. पैसिव वॉइस में हम फ्रेंच पे फोकस करते हैं कि फ्रेंच पढ़ाई जाती है, राइट? सो दैट वे पैसिव वॉइस इज यूजफुल. ओके, एंड इट इज यूजफुल to understand and to use, right? When you use, you get into the habit of using it. Okay? So next one, they grow strawberries every year. Again, this is something related to the habit, routine. They grow strawberries every year. Strawberries are grown. Strawberries are grown every year by them. Okay, so ये जो they है ये भी change हो रहा है, जैसे we us में change हो गया, they them में change होगा. So you will understand
all these small things, when you give it a try, when you make such sentences, when you uh, think of active sentences and you change them into passive, or if you have passive sentence, then you try to change it in an active voice, right? So there you understand in a better way. Tim sent an SMS to his friend, active voice, right? टिम ने अपने फ्रेंड को एसएमएस भेजा या भेजा था. अब हम टिम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हमको एसएमएस पे फोकस करना है. सो यू विल स्टार्ट योर पैसिव सेंटेंस विथ एसएमएस. एन एसएमएस was sent by Tim to his friend. An SMS was sent by Tim to his friend. SMS भेजा गया था टिम के द्वारा उसके फ्रेंड को. Right. So this is the sense coming out when you are using passive sentence. Okay. In the starting, it's important to pay attention to Hindi sentences also of passive sentences, that this kind of sense comes out when you make passive sentences. But again, remember that you don't have to do this all the time, that you are thinking in Hindi, you are then trying to understand the sense, and then you are trying that same active sentence or passive sentence in English. Okay. You don't have to do the translation a lot. You only have to take the help. That's true. In order to understand, right? Or because वो understanding भी clear होना चाहिए that this kind of sense comes out, right? Because ऐसा confusion नहीं होना चाहिए कि हिंदी में किस तरह का sentence होता है, क्या हम बोलते हैं. So just understand that this kind of sense comes out, right? And उसके अलावा भी एक important point है कि हम अपना focus change करते हैं, right? हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो डूअर है, जो करने वाला है, उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है. एंड पैसिव वॉइस में जो डूअर नहीं है, जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, राइट, वो पर्सन भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, राइट, उसके ऊपर हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है, राइट, एंड हम वहाँ पे उसके ऊपर फोकस करके वी मेक पैसिव सेंटेंस. ऑलराइट. Okay, she has written a test today. Okay, she has written a test today. A test has been written by her today. A test has been written by her today. Okay, test पे हमने emphasize किया, right? कि test उसके द्वारा आज लिखा गया है. Test has been written by her today. ओके, टेस्ट उसने आज लिखा है, राइट. थोड़ा सा जब आप आइडिया हो जाएगा इन सेंटेंसेस का, तो फिर हिंदी भी थोड़ा सा हिंदी में भी चेंज हो सकता है. बिकॉज मोस्टली इस तरह का सेंटेंस ऐसे भी बोला जाता है कि अ टेस्ट हैज बीन रिटन, राइट. टेस्ट लिखा है आज उसने टेस्ट किया है, आज उसने टेस्ट दिया है, राइट. सो शी हैज written a test today. Simple active sentence. A test has been written by her today. Passive sentence. Okay. यहाँ पे काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट चल रही हैं. सेंस समझना, जो सेंटेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं पैसिव वॉइस में, सिचुएशन के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, उन चेंजेस पे ध्यान रखना, राइट. एंड ये हैबिट होना कि कहाँ पे हमको क्या चेंज करना है. ओके. सो जब तक हमको टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग भी तो प्रॉपर होना जरूरी है. हमको ये समझ में आना चाहिए दैट वेदर इट इज पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसिव सेंटेंस कैसे चेंज करें. ओके. सो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना, एंड फिर थोड़ा सा हैबिट डाल, हैबिट से होगा, राइट. जब तक हैबिट नहीं डलेगी कि कैसे हमको सेंटेंसेस चेंज करना है, यू विल नॉट गेट द आइडिया. They visited that museum yesterday. Okay, that museum was visited by them yesterday. Okay, again, they becomes them. That museum was visited by them yesterday. That museum was visited by them yesterday. Right. Last one, I'm watching a football match now. Football match is being watched by me now. Okay, passive sentence. A football match is being watched by me now. मेरे द्वारा अभी फुटबॉल मैच देखा जा रहा है. ओके. सो यहाँ पे ये स्पीकर की चॉइस रहती है, ये उसे एक्टिव वॉइस यूज करना है, उसे पैसिव वॉइस यूज करना है. नॉलेज अंडरस्टैंडिंग दोनों वॉइस की होना जरूरी है. एक्टिव वॉइस भी, पैसिव वॉइस भी. एक्टिव वॉइस ज्यादा यूज होता है मोस्टली स्पोकन में, राइट. लेकिन कहीं ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमको पैसिव वॉइस यूज करना है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसकी भी अच्छी
अंडरस्टैंडिंग होना, उसका भी अच्छे हैबिट होना यूज करने की अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, so that you can use passive voice comfortably whenever there is a situation where you need to make sentence using passive voice. So there you are comfortable. There you are not there you don't have any confusion or doubt that how to speak this kind of sentence, how to talk about this uh, when there is such a situation. Okay, so it all depends on the speaker, and the speaker situation के according decide करता है what to say, what not to say, what to use, what not to use. All right. So ये आपने एग्जाम्पल्स सुन लिए हैं, राइट? आई होप के सारे एग्जाम्पल्स वैसे आप लोगों ने करेक्ट किए होंगे, लेकिन अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट हुआ होगा तो ये एग्जाम्पल्स के आंसर सुन के क्लियर हो गया होगा वो डाउट. एंड इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी यू हैव टू थिंक ऑफ योर ओन एग्जाम्पल्स, ओन सेंटेंसेस, राइट? थिंक अबाउट दैट. जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर. ओके, चलिए, ऑल राइट. एंड let's continue okay, with some more examples of active voice and passive voice. I want to give you some more examples. थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स हम वो शेयर करेंगे अभी यहाँ पे, राइट? उसके पहले थोड़ा सा हमको ये भी ध्यान देते रहना है कि जैसे आज हमारा डे 49 है, राइट? सो 49 डेज में जो हम सीख रहे हैं, राइट, इन सारे डेज में जो लर्निंग हुई है आपकी, राइट, उसमें आपको ये मेक श्योर करना है दैट यू आर कंफर्टेबल विद ऑल द पार्ट्स, राइट? एंड क्योंकि क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे होती हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम भी मिलता है प्रैक्टिस के लिए. सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग एंड you are doing, right? You are making sentences as per different topics, right? Regularly, continuously. So you are doing that on regular basis. That is important, right? So यहाँ पे अभी हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि उसको हमको कैसे करना था, राइट? कुछ एग्जाम्पल्स का थोड़ा सा वो ध्यान दे देते हैं, राइट? कि कुछ हर जगह आप पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी एक्शन की बात हो रही, राइट? सो एक्शन की जब बात हो रही है आप कहीं पे भी पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं, राइट? मॉडल्स में भी आप पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं. मॉडल के जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे हैं, राइट, जहाँ पे पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, राइट, वहाँ पे भी हम पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं. वो डिपेंड करेगा कि हम क्या मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस यूज कर देंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, she can be given that pen, for example, right? She can be given that pen. So this is passive sentence, right? She can be given that pen. उसको वो पेन दिया जा सकता है. Okay, so यहाँ पे can use कर रहे हैं, right? So the sense is coming out. She can be given that pen. ओके, एंड कैन की जगह हम मे भी यूज कर सकते हैं, राइट? कुड भी यूज कर सकते हैं. सो जैसे सेंटेंस हम नॉर्मली यूज करते हैं जब हमने समझा है मॉडल वर्ब जिस तरह से यूज होता है, राइट, उसी तरह से यूज करेंगे. बट हियर व्हेन यू मेक पैसिव सेंटेंस, सो वहां पे आप बी यूज करके एंड देन यू विल यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. सो शी कैन बी गिवन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, he may be allowed to sit there. Okay, he may be allowed to sit there. उसको allow किया जा सकता है, उसको permission दी जा सकती है, right? He may be permitted, he may be allowed to sit there. उसको वहां पे he may be allowed to sit there, right? Okay. All right. For example, I should be I should be I should be given that offer, for example. Okay, I should be given that offer. मुझे वो ऑफर दिया जाना चाहिए. I should be given that offer. Okay, I should be given that offer. मुझे वो ऑफर दिया जाना चाहिए. So, in the same way, you will use passive voice. Okay, and passive voice again. जब आप ये sentences read करेंगे, and when you come across such sentences, there you will get the idea
how the sentences are being made, कैसे sentences बनाए जा रहे हैं, कैसे sentences use हो रहे हैं, right? So you can use passive voice with modal verbs also. Okay, modal verbs use करके भी हम sentence use कर सकते हैं. For example, see this example. This is active voice sentence. He has to play cricket. Okay. So this is has to have to modal verb, right? He has to play cricket, right? This you can make in passive voice. How will you do it? Cricket has to be played. Okay, we always use verb third form when we make any sentence in passive voice of any situation, right? When we are making sentences in passive voice, right, in such sentences, we are using be, and after be, we are using verb third form. So cricket has to be played by him. Okay. What is the sense coming out from active voice? He has to play cricket. Simple sentence, active voice sentence. उसे क्रिकेट खेलना है या उसे क्रिकेट खेलना होता है या खेलना पड़ता है. Cricket has to be played by him. Cricket उसके द्वारा खेला जाना है. Cricket has to be played by him, right? For example, has to be she has to be given that offer. She has to be given that offer. उसको वो ऑफर दिया जाना है. She has to be given that offer. उसको वो ऑफर दिया जाना है. Right? Okay. All right. So here I wanted to share some examples of related to modal verbs. That modal verbs use करके भी we can make passive sentences, right? And again, it depends कि थोड़ा सा आपको try करना है. Modal verbs use करिए, sentences try करके देखिए, then see the sense, what is the sense coming out, and then try to change them into passive voice, and then again see the sense, what kind of sense is coming out when you make sentence in passive voice, when you use passive related sentences. All right. यहाँ पे कुछ sentences simple sentences भी हो सकते हैं, right? For example, I am tired. For example, she was busy. For example, they were stubborn. Okay, so these are again simple sentences, and these are simple sentences. I am tired, right? These sentences will remain as it is, right? So you will not try to change it into passive voice. Okay, यहाँ पे passive voice हम use नहीं करेंगे. एक simple सा reason ये है कि passive voice में हमेशा action यूज होता है, राइट? जब तक एक्टिव वॉइस में एक्शन नहीं है, राइट, एक्शन नहीं हो रहा, हम पैसिव वॉइस वहां पे यूज नहीं कर सकते. जहां पे एक्शन है वहीं पे पैसिव वॉइस, राइट? एंड दीज आर सिंपल सेंटेंसेस, राइट? दीज आर सिंपल स्टेटमेंट्स. शी वाज बिजी. यहाँ पे कोई भी हम एक्शन की बात नहीं कर रहे, राइट? हम सिंपल एक सिचुएशन है एंड उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट शी वाज busy. एक स्टेट की बात हो रही है. She was busy, they were stubborn, I am tired. So we will not try to change such sentences into passive voice, right? So ये जो जितने भी simple sentences हैं, verb to be के sentences हैं, present है, past है, future है, वो sentences हम passive voice में change नहीं करेंगे. They will remain as it is, right? And change करके देखेंगे भी तो उसका कुछ sense नहीं निकल रहा, meaningful नहीं होंगे. So that's why it's important to understand कि कहाँ पे हमको passive voice use करना है. You will use passive voice when it is necessary, when it is required, when you need to make a sentence using passive voice. There only you will make passive related sentence. Otherwise, you will not unnecessarily use passive voice. All right. You will try to make sentences in active voice only. Active voice is simple, is easy. So कोशिश ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव वॉइस यूज़ हो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करें, कुछ एक्सप्लेन करें, किसी टॉपिक के बारे में बात करें, वहाँ पे एक्टिव वॉइस यूज़ हो. हाँ, जब आपको लिखे कि फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है किसी
फोकस शिफ्ट करके हमको किसी पे एम्फसाइज करना है ऑब्जेक्ट पे, राइट। एंड जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से फोकस शिफ्ट होता है। वहां पे हम पैसिव वॉइस हमको यूज करना है, राइट, सिचुएशन के हिसाब से। इट कुड बी प्रेजेंट, कुड बी पास्ट, कुड बी फ्यूचर, राइट, कुड बी अ सिचुएशन जहाँ पे आपको मॉडल वर्ब यूज करना है, राइट। दैट वे यू विल यूज, ऑलराइट। चलिए, यहाँ पे जितने पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, इन पार्ट्स में कहीं पे कंफ्यूजन, क्वेश्चन, डाउट अगर हो तो उसको आपको शेयर करना है, उसके बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ऑलराइट। सो यू कैन टॉक अबाउट दैट, यू कैन mention your doubt, you can ask your doubt question using comment section, okay. Do that, and apart from that you have to keep on practicing, okay। जितना ज़्यादा आप sentences की practice करेंगे you will think, and इसमें आपको reading काफ़ी help करेगी if you read something, because जब आप reading करेंगे try to read uh, स्मॉल स्टोरीज रीड करिए। जब आप वो स्मॉल स्टोरीज रीड करेंगे तो वहाँ पे बीच बीच में आप देखेंगे कि वहाँ पे पैसिव रिलेटेड सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, वहाँ पे पैसिव रिलेटेड सेंटेंस आएंगे। वहाँ पे आपको आइडियाज मिलेंगे कि ओके, कि इस सिचुएशन में यहाँ पे पैसिव सेंटेंस यूज हो रहा है, समझ में भी आपको आएगा। एंड जब बार बार आप ऐसे सेंटेंसेस कम अक्रॉस करेंगे, सो you will get comfortable with such kind of sentences, right, and you will understand in a better way, in a better manner। so यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको रीडिंग की हैबिट भी डेवलप करना है, राइट। एंड यहाँ पे जो रीडिंग की हैबिट होगी वो विथ स्मॉल स्टोरीज, राइट, शॉर्ट पैराग्राफ्स, स्मॉल स्टोरीज, इजी रीडिंग, राइट। अभी डिफिकल्ट रीडिंग नहीं करेंगे, इजी रीडिंग करेंगे। सो इजी रीडिंग में आप मोरल साइंस की बुक्स देख सकते हैं, राइट। उसमें शॉर्ट स्टोरीज रहती हैं, राइट। 7th 8th क्लास 6th क्लास की जो मोरल साइंस की बुक्स होती हैं वहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, वो स्टोरीज पढ़िए, राइट। यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज, you will get a lot of different sentences, right, in terms of active voice and passive voice, and there you will understand those stories. Once you understand those stories, you will feel better, you will feel more confident, and that is very important to take your level to the next level. Okay. All right. Next, we are going to talk about something related to narration. And for that, okay, let me share my page with you. Okay, so again, this is one of the important topics in terms of writing, in terms of spoken also, but this is more important related to the writing part। writing part में ज़्यादा यूज होता है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन इससे हम ये नहीं समझेंगे कि स्पोकन में यूज नहीं होता, राइट। बिकॉज स्पोकन जो पार्ट है वो हमेशा स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीकर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सेंटेंसेस को यूज करना चाहता है। सो एज ए स्पीकर आप नॉर्मल सेंटेंसेस, इजी सेंटेंसेस यूज करके भी अपनी बात बोल सकते हैं। आप सेंटेंसेस को कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं, आप सेंटेंसेस को एडवांस्ड वे में भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप पैसिव वॉइस भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप इसको स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन में मोस्टली स्पोकन में डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच ज़्यादा यूज नहीं होता है। हम उसको एज इट इज़ यूज करते हैं सेंटेंसेस, ओके। सो हम ये देखेंगे एग्जाम्पल्स के कैसे यूज होते हैं। अभी तो हम जनरल आइडिया लें अबाउट डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, कि किस क्या सिचुएशन होती है, कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों हम इसको डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इसको हम नरेशन भी बोलते हैं, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, राइट। सो ऑल दीज आर टर्म्स दैट कैन बी यूज्ड हेयर। फर्स्ट ऑफ, पहले हम ये समझ लें कि व्हाट डू वी मीन बाय इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। डायरेक्ट स्पीच ऐसा है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, राइट। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये टॉपिक है, सो दिस इज हैपनिंग डायरेक्टली, okay, that I am speaking, you are listening, ये डायरेक्टली हो रहा है। एंड इनडायरेक्ट कब हो जाएगा, जब आप अपने फ्रेंड को जाके बताएंगे कि आज हमने क्लास में ये सीखा, सर ने आज ये बोला,
तो वहां पे वो जो पार्ट हो जाएगा वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि वहां पे आई एम नॉट देयर, राइट, मैं वहां पे नहीं हूँ, राइट। आप ये बता रहे हैं कि किसी पर्सन ने कोई चीज बोली, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में सर की बात हो रही है कि सर ने आज ये पढ़ाया, सर ने आज ये बताया, सर ने आज ये कहा, राइट। सो जब आप ये किसी अपने फ्रेंड को बताएंगे तो वो क्या हो रहा है, ये मैं उन लोगों को नहीं बता रहा, राइट। सो ये डायरेक्ट काम नहीं हो, ये जो बात हो रही है वो इनडायरेक्ट, आप बता रहे हैं कि सर ने ऐसा, राइट। सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि इनडायरेक्ट स्पीच से हम क्या समझते हैं। आप लोग दो फ्रेंड्स हैं, आपस में आप लोग बात कर रहे हैं, राइट, आप लोगों ने बात करी, आपका जो भी कॉन्वर्सेशन था वो ओवर हो गया। अब आपने जाके अपने किसी और फ्रेंड को बताया कि मेरी फॉर एग्जाम्पल राहुल से ये बात हुई, राहुल ने मुझसे ये बोला, राहुल वहां पे तो नहीं है, राइट। राहुल वहां पे नहीं है, तो आप जो उनकी जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ, जो भी उनके स्टेटमेंट्स थे, ओपिनियन थी, राइट, वो आप शेयर कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज हैपनिंग इनडायरेक्टली। जो आप उनके सेंटेंसेस हैं, जो आप उनकी ओपिनियन है, वो आप बता रहे हैं, राहुल नहीं बता रहा वहां पे, वो आप बता रहे हैं, राइट। सो दैट इज नॉट हैपनिंग डायरेक्टली, दैट इज हैपनिंग इनडायरेक्ट, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट डायरेक्ट स्पीच, जहाँ पे डायरेक्ट जो जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्वर्सेशन है वो डायरेक्ट हो रहा है, दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, राइट, वहां पे वो दैट इज डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। इनडायरेक्ट जहाँ पे जो भी पर्सन की बात हो रही है वो वहां पे नहीं है, एंड फिर आप उसके रिलेटेड उसकी ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, right? So this is all about direct and indirect speech, right? So someone tells us something and maybe after some time tell someone else. So same situation, right? क्या वो वहां पे पर्सन नहीं है, जो भी बोला, कहा, जो भी बताया, वो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। सो समझ में आ रहा है, डायरेक्ट स्पीच जब आप आपस में आमने सामने बात कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जहाँ पे जिस पर्सन से आपकी बात हुई वो पर्सन वहां पे नहीं है, आप उसके जो भी ओपिनियन है, सेंटेंसेस है, आप वो किसी से शेयर कर रहे हैं कि उसने मुझसे ऐसा बोला था, ऐसा बताया था, राइट। सो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। एंड अब इनडायरेक्ट स्पीच के भी रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं कि आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, उसके भी रूल्स हैं। सो रूल्स आर देयर, एंड रूल्स आर देयर टू टेल यू हाउ टू यूज इट, राइट। सो जितने भी रूल्स हैं, अगेन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमको इन रूल्स को मेमोराइज करना है, राइट। रूल्स आर देयर टू अंडरस्टैंड। वंस यू अंडरस्टैंड दीज रूल्स, वंस यू यूज, राइट, वंस यू यूज them while speaking, while writing, while reading, then you understand all these things in a better way, right? So कहीं पे भी हमको ये नहीं समझना है कि याद करने से इट विल बिकम easier। नहीं, याद करना नहीं है, समझना है, समझने के बाद उसको खूब यूज करना है, राइट। एंड यूज करने के लिए यू कैन यूज ऑल द फोर स्किल्स, चारों स्किल्स यूज कर सकते हैं। लिसनिंग यूज कर सकते हैं, राइटिंग यूज कर सकते हैं, रीडिंग यूज कर सकते हैं, एंड स्पीकिंग यूज कर सकते हैं। ये चारों जो पार्ट्स हैं, राइट, ये चारों पार्ट्स हमको हेल्प करते हैं अच्छे से समझने में, बेटर समझने में, राइट। सो ये चारों पार्ट्स में से कुछ भी आप कर सकते हैं, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रीडिंग अच्छी लगती है, रीडिंग करिए, दिस विल हेल्प यू। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, राइट, सो लिसनिंग यूज करिए, राइट, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। स्पीकिंग, दैट इज, वो तो करना ही है, राइट। वो तो करना ही है, बिकॉज अगर हमको अपना लेवल अप करना है, सो speaking is very important, right? You have to say something, you have to make sentences, you have to talk about something, you have to share your thoughts, you have to share your opinion, you have to think about different topics, you have to talk about different topics, right? That way you will take your level to the next level, okay? So next part related to reported speech के जो reported statements होते हैं, उसमें या तो हम say या tell यूज करते हैं, राइट। say tell बहुत यूज होता है। जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि say tell किस तरह से यूज हो रहा है। so say tell दोनों यूज कर सकते हैं हम, say भी यूज कर सकते हैं, tell भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में यूज करते वक्त थोड़ा सा ग्रामर का डिफरेंस रहता है, राइट। थोड़ा सा ग्रामर को चेंज कर देते हैं, राइट, जब हम से यूज करते हैं या हम टेल यूज करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे हम ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स हैं, ओके।
सो दोनों एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं, एक में हमने सेड यूज कर लिया, एक में टोल्ड यूज कर लिया, राइट। कैसा एग्जाम्पल आ रहा है? ही सेड दैट ही लिव्ड इन दिल्ली, राइट। सो कैसा इनडायरेक्ट स्पीच है, राइट। कि उसने कहा, ही सेड, उसने कहा कि वो दिल्ली में रहता है। ही सेड दैट ही लिव्ड इन दिल्ली। ओके। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंस वैसा नहीं निकलेगा, राइट। सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंस वैसा नहीं लिखेगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो ये सेंटेंस है, ही सेड दैट ही लिव्ड इन दिल्ली, अगर हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो कैसा सेंस निकल रहा है सेंटेंस? ही सेड ही लिव्ड इन दिल्ली, उसने कहा वो दिल्ली में रहा था, या वो दिल्ली में रहा था। बिकॉज हम देख रहे हैं कि लिव्ड यूज हो रहा है, तो ये तो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका सेंस ऐसा निकलेगा, ही सेड, उसने कहा वो दिल्ली में रहा था, राइट। दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप सेंटेंस को चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपसे बोल रहा हूँ, राइट, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा वेयर डू यू लिव, मैंने आपसे कहा आई लिव इन दिल्ली। ओके, सो ये हमारा सिंपल सेंटेंस, वेयर डू यू लिव, आपने पूछा क्वेश्चन, मैंने पूछा आई लिव इन दिल्ली। जब आप जाके अपने फ्रेंड को बताएंगे कि सर ने मुझसे कहा, तो आप क्या बोलेंगे? ही सेड दैट ही लिव्ड इन दिल्ली। तो सेंस तो प्रेजेंट का ही निकलेगा। सेंस कैसे निकलेगा? कि उन्होंने कहा वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन सेंटेंस ऐसे आएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। इस तरह से सेंस भी चेंज होगा, ग्रामर भी चेंज होगी। ओके, ये अभी आपको पता चलेगा जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे कि ये कैसे होता है एंड इसको क्यों ऐसा सेंस निकलता है। सेट की जगह पे हम टोल्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके, टोल्ड भी यूज कर सकते हैं, बस टोल्ड जब आप यूज करेंगे तो वहां पे हमको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए। जैसे यहाँ पे मी है, he told me, he told her, he told him, he told father, he told sister. told के बाद हमको कुछ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए, लेकिन said में हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे he said me, he said him, he said her, right? He said father. No, he told father, she told father, he told brother, right? ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। अब बिकॉज टोल्ड यूज हो रहा है, सैड कहा, टोल्ड मतलब बताना, टेल का सेकंड फॉर्म है। ही टोल्ड मी दैट ही लिव्ड इन दिल्ली, उन्होंने मुझे बताया। सो सेम एग्जांपल कि आप बोल रहे हैं अपने फ्रेंड से कि मुझे सर ने बताया कि वो दिल्ली में रहते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही लिव्ड इन दिल्ली। सो ये यहाँ पे आपके पास एज ए स्पीकर ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच भी यूज सकते हैं, या स्पीकिंग में आप डायरेक्ट स्पीच भी यूज कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को ऐसे भी बोल सकते हैं, माई सर टोल्ड मी दैट ही लिव्स इन दिल्ली। सिंपल सेंटेंस, राइट। माई सर टोल्ड मी, मेरे सर ने मुझे बताया कि वो दिल्ली में रहते हैं। दिस इज इजियर पार्ट, राइट। ये डायरेक्ट स्पीच है, राइट। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच स्पोकन में हम यूज कर सकते हैं, करते भी हैं स्पोकन में, राइट। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इनडायरेक्ट स्पीच भी यूज कर सकते हैं। सो जब वो इनडायरेक्ट स्पीच यूज करेंगे स्पोकन में, सो दे विल मेक सेंटेंस, दे विल स्पीक द सेंटेंस लाइक दिस, ही टोल्ड मी दैट ही लिव्ड इन दिल्ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। सो यहाँ पे हमको ये नहीं समझना कि उसने मुझे बताया कि वो दिल्ली में रहा था। नो, द सेंस इज कमिंग, ही टोल्ड मी दैट ही लिव्ड इन दिल्ली, मींस उसने मुझे बताया कि वो दिल्ली में रहता है। ओके, ऑलराइट। जब आप अभी इसके एग्जांपल्स देखेंगे, इट विल बी क्लियर। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, राइट, बट इट विल बी ओके, राइट, आफ्टर अ फ्यू एग्जांपल्स। चलिए, more examples. She said that she was going to Mumbai next week. Next week की बात हो रही है। She said again, two friends आपस में बात कर रहे थे। एक friend ने बोला that I'm going to Mumbai next week. Okay, I'm going to Mumbai next week. आपके फ्रेंड ने जाके अपने किसी और फ्रेंड को बताया कि उसने मुझे ऐसा बताया। She said that she was going to Mumbai next week. तो सेंस तो वही रहेगा कि उसने मुझे बताया, उसने मुझे कहा, शी सैड दैट शी वॉज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, कि वो नेक्स्ट वीक मुंबई जा रही है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द सेंटेंस, विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, राइट। कि शी वॉज गोइंग, इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस हो रहा है, तो सेंस तो ये होना चाहिए था कि वो मुंबई नेक्स्ट वीक जा रही थी। नो, दिस इज नॉट द सेंस कमिंग आउट, बिकॉज दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। इन इनडायरेक्ट स्पीच,
structure is used in a different way and the sense is taken out in a different way. Okay, सेट की जहां अभी इन एग्जांपल्स में सिर्फ हम सेट और टोल्ड का यूज देख रहे हैं, राइट, कि टोल्ड के बाद हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं एंड सेट के बाद हम यूज नहीं कर सकते। ये हमारे इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स है। शी टोल्ड मी दैट शी वाज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। सो हम सेट भी यूज कर सकते हैं, टोल्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि टोल्ड के बाद वी नीड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बट आफ्टर सेट वी डोंट नीड एनीथिंग। ओके, एंड यहाँ पे दैट आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, यहाँ पे दैट का सेंस है की, उसने कहा की, राइट, एंड ये ऑप्शनल है, राइट, दैट आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, दैट आप चाहे तो नहीं भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम ऐसे भी बोल सकते हैं शी सेड शी वाज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, सो इट्स नॉट important to use that in indirect speech. This is optional. You can use it, or if you don't want, it's okay, no problem. All right. चलिए, यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे सिर्फ हमको सैड एंड टोल्ड पे ध्यान देना है, राइट। यहाँ पे सिर्फ हम सैड टोल्ड को देख रहे हैं, बाकी जो सेंटेंस है, जो उसका पार्ट है, उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट। यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इनडायरेक्ट स्पीच। सो यहाँ पे व्हाट विल यू यूज इन द ब्लैंक, सैड और टोल्ड। यहाँ पे ये देख रहे हैं हम कि आप सैड यूज करेंगे या टोल्ड यूज करेंगे। जहां पे टोल्ड यूज होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आना है, जहां पे सेड यूज होगा वहां पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आना है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल यू से, राज सेड, राइट, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, राइट। राज सेड दैट ही वुड जॉइन अस आफ्टर पार्टी। ओके, सो राज ने कहा कि वो हमको पार्टी, दैट ही वुड जॉइन अस आफ्टर पार्टी, पार्टी के बाद वो हमको ज्वाइन करेगा, राइट। सो अगेन दिस इज इनडायरेक्ट सेंटेंस। ओके, आपने राज से बात की, राज ने आपको बताया दैट आई विल ज्वाइन आफ्टर पार्टी, आई विल ज्वाइन यू आफ्टर पार्टी, एंड यही सेंटेंस जाके आपने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मेरी राज से बात हुई थी, उसने मुझसे बोला है he said that he would join us after party. So indirect sentence. Okay, so sentence will remain related to the situation. Okay, and you will see that how to make it. Okay, यहाँ पे हम देख रहे हैं object pronoun, so that's why we will not use said here. We told her that we were going to the market. Okay, again यहाँ पे क्या सिचुएशन है, आप किसी को बता रहे हैं कि मैं हमने उससे बोला था, राइट। सो वी टोल्ड हर दैट वी वर गोइंग टू द मार्केट, वी टोल्ड हर दैट वी आर गोइंग टू द मार्केट, राइट। ये सेंटेंस भी हो सकता है, राइट, वी टोल्ड हर दैट वी आर गोइंग टू द मार्केट, दिस इज डायरेक्ट स्पीच, दिस इज ऑल्सो ओके स्पोकन में। we told her that we were going to the market, this is also the same sentence but it is an indirect speech। हमने उसको बताया कि हम मार्केट जा रहे हैं, right। I told him I wasn't scared, she said she loved chocolate, I said that I hated bitter gourd. Okay, so understand that direct and indirect speech, these sentences are more related to the written part. But again, it's important to understand that there are certain situations where there are a lot of people who talk about certain things, who talk about different things using indirect speech. So that way, you need to understand that this is the sense coming out from these sentences, right? And writing part में तो use होता ही है, writing part में it's easy to understand, right? राइटिंग पार्ट में भी हम दोनों पार्ट्स यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट स्पीच भी यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच भी यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस है हमारे पास। अगर हम किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ डायरेक्ट स्पीच ही यूज करना है या इनडायरेक्ट स्पीच ही यूज करना है। अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द स्पीकर, स्पीकर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, उसके कंफर्ट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है whether to use direct speech or indirect speech, right? कहाँ पे क्या यूज करना है, दिस डिपेंड्स ऑन द स्पीकर। ओके, सो यहाँ पे ऑफ कोर्स देयर आर सम रूल्स, वो आपको रूल्स ध्यान में रखने हैं एंड रूल्स को ध्यान रख के आप यहाँ पे समझेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच में हम इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस कन्वर्ट करेंगे। सो हियर आर सम रूल्स, ये टेंस के हिसाब से रूल्स हैं
कि जब डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस आएगा, जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहां पे टेंस चेंज हो जाएगा उसका। ओके, सो अगर कोई सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट हो जाएगा। ओके, सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान में कैसे रखेंगे? सबसे ध्यान में रखने का बेस्ट तरीका क्या है? एग्जाम्पल्स करके। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल्स करेंगे, वो एग्जाम्पल्स पे आप ध्यान देंगे एंड देन फिर आप अपने खुद एग्जाम्पल्स करेंगे टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? टू अंडरस्टैंड रोल ऑफ टेंसेस, राइट? कि टेंसेस किस तरह से चेंज हो जाते हैं। सो सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सो ये जो एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है इसमें आपकी टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए। ओके, जितना भी हम पार्ट्स करते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे वन बाय वन सारे पार्ट्स करें, राइट? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो गई। अब वो अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रांग हो गई है तो अब आप उसको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं। अब आप उस अंडरस्टैंडिंग को, टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग को आप यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में यूज करें, राइट? सो कोई भी सेंटेंस पढ़ के आपको समझ जाना है कि ओके दिस इज सिंपल प्रेजेंट, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमको उसको सिंपल पास्ट कर देना है। कोई भी सेंटेंस हमको दिख रहा है डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट है, हम उसको इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे? पास्ट परफेक्ट कर देंगे। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट विल बिकम पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस विल बिकम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड अगर पास्ट परफेक्ट है डायरेक्ट स्पीच में तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होगा, एज इट इज यूज हो जाएगा, राइट? फ्यूचर सिंपल में जहाँ पे वेयर एवर वी यूज विल, फ्यूचर के जितने भी सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम विल यूज कर रहे हैं, वी विल चेंज विल टू वुड, वहाँ पे हम उसको वुड से चेंज कर दें, राइट? सो इस तरह से हम सेंटेंसेस यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ अलग से रूल्स भी हैं, राइट? वो रूल्स भी हम देखेंगे किस तरह से यूज करना है। सो देयर आर सम रूल्स, राइट? कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चंस कैसे चेंज होंगे, क्या रूल फॉलो करेंगे। सो यू विल अंडरस्टैंड all these things related to indirect speech with the help of examples in the next class। लेकिन अभी आप इन ये जो पॉइंट्स है, जो रोल चेंज हो रहा है, टेंस का जो रोल चेंज हो रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए एंड दिस we will use in the next class with the help of different examples। Okay, so again it is dependent on प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, ऑफ कोर्स स्पोकन में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सो इट मींस आपको राइटिंग में इसको यूज़ करना है, राइट? सो यू हैव टू राइट सेंटेंसेस, यू हैव टू यूज़, you have to make a sentence and you have to say that how to use it in indirect speech, how to do that in indirect speech, and that way you can do it. Okay, so this way you will use indirect speech. All right. Okay, so this much for today, and we will continue in the next class। Okay, next class में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के, राइट? अभी तो हमने आप सिर्फ ये देखा कि सैड एंड टोल्ड का यूज़ देखा, एंड आज हमने ये देखा कि कैसे टेंसेस चेंज हो जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अब ये टेंसेस कैसे चेंज होंगे इन द एग्जाम्पल्स, दिस वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम ये एग्जाम्पल्स देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम examples। Okay. Give me a moment। Okay. All right। Give me a moment। All right। Okay। चलिए, we will continue in the next class, right? I was thinking to give you some work related to active voice and passive voice, but I'll do that in the next class, okay? And I'll give you some more examples related to active and passive voice. So change those active sentences into passive voice and just get into the habit of using them, right? Again, passive voice और इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों टॉपिक्स में ये इम्पोर्टेंट है समझना कि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, नॉर्मली ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सो इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना है टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे,
right? And वो आप कैसे करेंगे with the help of examples. Okay, so this much for today, everyone. We will continue in the next class. Till then, take care, keep on practicing, and make sure that you understand all these things comfortably. And if there are questions, if there are any doubts, then you have comment section. You can write down your doubt, write down your question, or you can also share some examples there. If you think that you want to share some examples, you can do that. And apart from that, there are other classes going on, right, for JEE students, for NEET students. So if you know anyone, right, who are preparing for these exams, tell them about these classes, spread the message, all right, and talk about these classes among your friends, among your family members also. Spread the message, all right, and we are meeting in the next class. Till then, bye bye.